Welcome back to the new session. As we know that there will be the series of the lectures delivered by the eminent resource persons. Today, in that series, a lecture is to be delivered by Professor Nizamuddin Khan Saab, and he will interact with you on the topic how to select the research idea and steps to conduct research. Let me to introduce our eminent resource person. Professor Nizamuddin is a professor in the Department of Geography, Aligarh Muslim University, Aligarh, and he has experience of 30 years for teaching and research. Professor Khan has a specialization in marketing, political and agriculture geography. Livestock, husbandry and dairy farming are important thrust areas of his research work. He has published around 120 research papers and written 17 books. Dr. Khan has guided 17 PhD scholars and 05 PDF. He has completed 10 major research projects. He is also credited with Bharat Bhugol Vashisht Ratna Award, Excellence Professor Award, Dr. S. Radhakrishna Distinguished Professor and Researcher Award. He has been also awarded with Best Paper Award in USA, Turkey and Malaysia. Dr. Khan has also visited 22 countries of world. He has been also course director of 6 ICSSR sponsored research methodology and capacity program. So with these words, we welcome the resource person, as the biodata itself indicate that really he is a very experienced resource person, and it will be better on par to learn about the idea and steps of the research methodology. Sir, we welcome you to the session of 10 days research methodology course. Really, I'm very much hopeful that our participant will be benefited from your experience. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. You have given me opportunity for delivering not a lecture but a interaction program with the students, because the research program is not for delivering lecture, but it is to how to interact with each other and get the more acquaintance with the problem, issues and challenges, and how could it be resolved. This is the issues for the researcher. Because this is not the coaching class. We have not to go to some very salient feature like that. But this is interaction program, the action program. So, as Professor Naseem Saab has already pointed out, and he has given the introduction very excellent, means the appreciation, but for me it is not so much, But however, this our presentation will be beginning as in the KG class, that is ABCD. It is the beginning for the research scholar. I think most of the participants, they are either the new registered or maybe the middle or like that. So what will be the comfortable, whether the Hindi, Urdu, English or mix language? Hindi wale kitne hai? Okay, inshallah. And so I will try to follow the Hindustani language mix, so that
we could understand each and every one well, and we also understand the problem. Thank you. So, Sir, before starting with the interaction session, I would look to, पहले दे देंगे? लाइट जला जरा सा 1 मिनट. Thank you. अभी तो नहीं खुला है. सच में डालो. वर्किंग ऑन इट. लोड हो रही है. अभी चालू है. How to proceed? क्या नहीं खुल रहा? क्या करता है? खुल गया. मुझे बड़ा कर दो. अच्छा ठीक है. नो प्रॉब्लम. पानी थोड़ा सा देना. पानी जब लगा जाती है. Dear participants, now this deliberation is for starting our research work, because we have the experience after getting the post graduation. The students are rushing with the supervisor and generally asking, sir, please tell me topic. And every student is very much interested now for the PhD work. There are so many reasons. I am not going that. You will decide, So this is very difficult task. A student understand that the topic is in the pocket of the supervisor, and supervisor understand the student has the very much the understanding of the problem and learning that. So sometimes the confusion may be created. And if without any consideration topic is decided, so sometimes the student become frustrated. And many of cases recorded, they left without PhD. And though the scholarship finished, no problem, but PhD did not complete it. So how to proceed for the research work? This is the first why, then. First of all, we know what is research. Research क्या होता है? इसको भी जानना बहुत जरूरी है. हम लोग रिसर्च उतना क्या समझते हैं? सारा भारत रिसर्च करेंगे. कौन कर देंगे? क्या भाई? Can you tell me what is research? Research? Critically analyzing a problem. Analyzing A problem. problem is a research. Anyone answer? So, research is something that we again go for a new information in existing ones. Exploring new information. And anyone? Hello. Research is a kind of the phenomena, or you can say that it is the academic
on the, you say, the ability of the scholars. Means to what extent he has the scientific temper. Temper means behavior. Because you know, aphids always fall down. In a kitchen, when boiling water, always the cover of the pot making some disturbance. But all the women are not all the people became either Newton or the James Watt. Only depend upon how much a person has the curiosity to explore the reason why a thing is happening. So this is my so that the research is a logical and systematic search. Logical and systematic search for a new and useful information on a particular topic. एक कह देना आसान नहीं कि नाले से रेत निकाल के खाना बनाओ. It is simple work. I am not going our prime minister told like that. He must have the understanding, but I don't know. But this is simplest to say it is not the research. We have to go through the reasoning. How this is the gas from all these things could be harnessed and could be utilized, and the result could be, and with the example and experiment we have to prove. तो क्या है? ये जो है रिसर्च जो है लॉजिकल काम है, ये सिस्टमैटिक स्टडी है, on new and useful information on a particular topic. किसी पे हमें करना है, तो इसके लिए हमें सिस्टमैटिक स्टडी करना पड़ेगा. For example, very simple, the poem. हर बच्चे को सिखाया जा रहा है, twinkle little star, how I wonder what is meant by this. बच्चे को भी सिखाया जा रहा है कि देखो ये सोचो तुम तारे क्यों चमक रहे हैं. और आता है किताबों के अंदर, डिवाइन बुक्स के अंदर आता है. एक आदमी छत के ऊपर लेटा हुआ है, एक तो तारों को गिन रहा है, इंजॉय कर रहा है, और एक तारों को गिन करके कहता है तेरा बनाने वाला जरूर कोई है. तो क्यों टिम कर रहा है? There is some reason behind that the star is twinkling. So this depends upon the pupil or the person or who are here, how much he have the perception. So twinkle little star, how I wonder what you are. It is an investigation of the finding solution for scientific and social problem. Scientific and social problem के लिए solution का ढूंढना भी एक research है. This is research. It is an investigation of finding solution to scientific and social problem through objective and systematic analysis. It is search for the knowledge that is discovery of the hidden truth. एक बात आप समझ लेंगे कि कोई रिसर्चर, कोई साइंटिस्ट कोई चीज बना नहीं पाएगा. All the things are already existed in the universe. आप चाहे उसे खुदा कहें, भगवान कहें, जो भी कहें, और नेचर कहें. Always that had been all been created. But this is our unfortunate that we are not doing all the things. हम हर चीज को नहीं जानते हैं. इससे पहले यहाँ का जो एम्बलम होता था, एमी का हटा दिया गया, अरबी में लिखा गया था, अल-नमल इंसान मालूम यालम, अरबी में था कि जो खुदा ने बता दिया उसे तुम्हें पता है, जो नहीं बताया कुछ तुम्हें मालूम नहीं. So there are so many things in the universe that is existing, but due to our ignorance, we are not able to understand this. That's why we said that the disclosure of the ignorance of the human being about the treasure of the nature, it is the research. इसने कहा कि बायोगैस बनने लगा, बायोमास से गैस पैदा होने. बायोमास को याद है, ऑलरेडी बायोमास दिया. सोलर एनर्जी, तो सूरज का आज निकल रहा है, यूनिवर्स बनने से पहले सूरज. तो अब उसको हमें पता चल गया, नॉलेज से आ गया, तो क्या हो गया? साइंटिस्ट हो गया. न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन मॉडल को न्यूटन ने थोड़ी बनाया, but Newton explored the system, so he became. So this is new. So what is research? Research is the discovery of the hidden truth. And again, there are so many things,
It is to disclose the ignorance of the man about the hidden bounty of nature. 200 साल पहले कोई नहीं जानता पेट्रोल है, कोयला जानता, 300 साल पहले नहीं जानता कोल है, नेचुरल गैस कोई नहीं जानता था, but all were existing in the earth. तो this is the disclosure, this is the अपनी जहालत को खोलने का नाम, इसे कहते हैं रिसर्च. हम सब जाएंगे इन बहुत सी चीजों में, बात समझ रहे? आप बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, चाहे कितने बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता पीछे क्या होने वाला हमारे. क्यों भाई? आदमी चल रहा है, चला गया दुनिया से, तो नहीं पता, बहुत चीजें हमें नहीं पता. तो so that it is to disclose the ignorance of the man about the hidden bounty of the nature. Research is indeed civilization. Understand? Research is need in civilization and determine the economic and social political development of nation. If our research is not strong, then we never be the Vishwaguru. You understand one point? The Western peoples, generally the West European countries and the America, they are generally saying, using this word, that Eastern peoples are the burden on the West. Because all the researchers we have explored from the West and we are only utilizing, applying this. तो बार बार वो कहते हैं कि ये पूरा जो है ना ये सब, ये बोझ हमारे ऊपर है. रिसर्च तो हमने किया है सब, हालांकि उससे पहले रिसर्च लोगों ने किया, but they are having the patenting and all. So however, no, research is a civilization. If we have the strong understanding of the thing or anything, so then we can dare to say something that we are the. तो ये भी ये समझे नेशनल डेवलपमेंट का एक एजेंडा है. एक civilization है, that civilization which are having the good content of the research and all these things, this will be very important status of the country. Result of scientific research very often force change in the philosophical view of the problem, which extend far beyond the restricted domain of the science itself. Research is not only confined to the science and technology only, but there are the vast areas of the research. अभी तक हम लोग रिसर्च क्या करते हैं कि फिजिक्स में रिसर्च हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, वो चांद पे पहुंच गया, फला पहुंच गया, वो रिसर्च है. But in the morning, what the Professor Sharma had told us, that there is not only climate change, there is also social change, food habit changing, customs changing. There are different kinds of changes which are taking place in the world. The thing which was 100 years back, today is not there. It became obsolete. And today, what it will be obsolete for the future. So there is a continuous change. So to explore the things, आप उसमें नई चीजें ढूंढना, सबको पता लगाना, सारे सिस्टम को समझना, ये साइंस से हटकर, इसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं, उससे हटकर सोशल साइंस में भी आना जरूरी है. If social science research is not strong, then natural science will be not beneficial. अगर समाज नहीं सही है तो किसके लिए भाई बंदूक किसके लिए बना रहे हैं? आतंकी बनेगा? बात समझे? If arms are not well utilized or used, the holder of the arms are not good, then what will happen? If medicine manufacturers are not good, then what will happen? You know very well. कोरोना भी आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, सिमसिम so that social research, behavioral research, it is also very important part. तो ये है रिसर्च का. रिसर्च हम कहीं कन्फाइंड नहीं है, it is vast area of the research. Then you कोई आपको समस्या होगी तो बीच में रोक देना, इसलिए इंटरेक्शन होगा. कोई जो नहीं तो हम बोले वन वे चैनल नहीं चलता. अब ये रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या हमारा है? हर आदमी कहीं कल हमने क्या कर दिया? डिस्कवर न्यू फैक्ट्स. अगर कोई ये मैदान उतरता है कि हमें तो आपके दिमाग बनना है, या हमें कोई बनना है, या हमें कोई दुनिया का छोर पकड़ना है, या कोई नहीं, तो दिस ऑब्जेक्टिव टू वेरीफाई एंड टेस्ट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ये बहुत
बहुत से आप इसमें चैनल आजकल चल रहे हैं जो फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं, झूठे फेक न्यूज, बट इट इज आल्सो द वर्क दैट यू वेरीफाई द फैक्ट्स वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ये भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव रिसर्च का है। देन to analyze an event or process or the phenomena to identify the cause and effect relationship. As it would be that it is a phenomena. You have to make an analysis and then the how the relation is established between them. सिर्फ कह देना नहीं बात कि कोरोना साहब बड़े लोगों को कोरोना हुआ, हम सुनेंगे बड़े लोगों को कोरोना हुआ, क्यों भाई बड़े लोगों को क्यों हुआ? अभी the statement we have to prove how the corona and the income is related together. Why the poor people were not affected by corona? We have to prove them. तो ये cause and effect analysis ये बहुत important part होता है रिसर्च के अंदर। अगर ये चीज कमजोर है तो रिसर्च आपकी क्रिएटिव नहीं हो पाएगी। फिर आप to develop scientific tools, concepts, theories to solve and understand the scientific and non-scientific problems. There are two different problems in society. अब सोसाइटी के लिए अगर हम नहीं हैं तो किसके लिए? सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हथियार बनाएं, टूल्स बनाएं, दवा बनाएं, या और कोई हमारे पास नुस्खा तैयार हो जाए, उसको तैयार करना, जिससे समाज की साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक जितनी समस्या है वो हल हो जाए, ये भी एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। Then to find solution to the scientific and unscientific, to overcome or solve the problem occurring in our everyday life. These are the objective of the research. The researcher must think, do we have any objective of them? सिर्फ रिसर्च करने आगे साहब बिना किसी सोच समझ के, तो वो रिसर्च ऐसे होती है बोझ, आपको सब बोल रिसर्च हुआ ना बोल, और जो किसी शौक से आता है रिसर्च में फिर तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। फॉर बीइंग ए साइंटिस्ट मेरिटोरियस इज नॉट नेसेसरी। बीइंग ए साइंटिस्ट ए रिसर्चर हार्ड वर्कर, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ये बहुत चीजें जरूरी हैं जो कर लेता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा तो भूल जाता है रिसर्च। हाँ, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव हमारा। अब ये हम आपको बहुत बुनियादी चीजें बता रहे हैं इस वक्त। मोटिवेशन रिसर्च का क्या है? आप सब सोच लो हम किस मोटिवेशन में चल रहे हैं। मोटिवेशन डिसाइड की रिसर्च हमारी कहाँ जाएगी। टू गेट रिसर्च डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी along with the benefit like better employment, promotion, improvement, है ना, बहुत लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाता है GRF से, नेक्स्ट हो जाता है। अब PhD ना करेगा तो 4 इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और PhD नहीं करेगा तो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, प्रोफेसर बनने कोई सवाल ही नहीं। तो एक तो ये करता है सर, जल्दी फल्दी किसी तरीके से ऐसा प्रोवाइडर ढूंढता है कि जो आगे खत्म कर दे, और एक बात मोटिवेशन है। ठीक, दूसरा मोटिवेशन है डिग्री फॉर टू गेट ए टीचिंग पोजीशन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ऐसा होता ना, अभी आया था कि PhD कंपल्सरी, तो हर जगह पर देखिए PhD नॉट कंपल्सरी। और ये आज से नहीं चल रहा, 85 से चल रहा। जब when we were the student, कभी से GRF चल रहा है, मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी। अब तक कैसे चल रहा है? किसी ने टप कर दिया, किसी बच्चा कर दिया, तो एक तो ये है, some people are getting the PhD degree for getting the citizenship. Some other country, आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया, डिग्री है PhD, वेलकम। To solve the unsolved the challenging problem, there are both the objective motivations हैं, और
to get the joy of doing some creative things. It is also motive. मतलब इंटरेस्ट आने लगे। PhD भी एक इंटरेस्ट की चीज है, रोज की चीज नहीं, छोड़ भाग देना चाहिए। जब वैसे PhD नहीं होती, to acquire respectability, to get the recognition, curiosity to find out the unknown facts have unknown, curiosity to find the new things, to serve the society by solving the social problems. These are the motivation. आजकल का मोटिवेशन क्या है? बात करना, जॉब मिल नहीं रहा है, तो कोशिश करके ज्यादा हो जाते ठीक मार कर बहुत से ज्यादा माफ करना कि उसे एप्लीकेशन लिखने में नहीं लिख पा रहा है, एक्सपीरियंस, लेकिन ज्यादा हो गया है, हो गया गेटिंग। अब वो 5 साल मजबूर है उसको पूरा करने के लिए, काम भी नहीं करता 5 साल नहीं, जब 3 दिन बाकी रहेगा सारा सबमिट करो। कुछ मोटिव ऐसे हैं कि जो सोशियोलॉजिकल हैं, वो शादी मैरिज का चक्कर खड़ा होता है, और कुछ मोटिव ऐसे हैं कि भाई कुछ नहीं काम है तो बेस्ट motive should be get the enjoyment with the research, to make some work available which are suitable for the society. This is what is society, this is motive. अगर ये motive आपका रिसर्च का है तो you will be enjoying, you will be enjoying, otherwise very difficult. और हम बार-बार एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारे यहाँ एक स्टूडेंट लड़की आमतौर से बेचारे सोशल सिक्योरिटी, बहुत सिक्योरिटी होता है, जिससे उनका बाहर कदम बढ़ाने की तैयार नहीं है, सुभान है, but she dared to do. She traveled China, then Morocco, then Paris, and then and simple, and according to Aligarh. So I found that nothing is barrier there. Without any civic compromise, she is doing well. कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है, but there is no such kind of problem. प्रॉब्लम के घर में भी आ जाती है, कोई नहीं कर सकता. So however, this is interest. This is the interest. If you have interest in the research, तो वो then opportunity is there. रास्ता खुलता चला जाएगा। If you have not opportunity, तो 40,000 रुपया मिलेगा, पेपर एक देने के लिए, रोड नॉट कैंसर का इधर चलता रहता है। आओ मेरा ये सब प्रश्न आप पूछो। Next we are coming to the point, you know. अब हमें पता है रिसर्च टाइप क्या है जो हमें रिसर्च करना है। रिसर्च के बहुत से किस्में हैं। There are mainly 2 types of research. One is known as the fundamental research or the basic research. Second is the applied research. But this fundamental and applied research mostly in the natural sciences. In social science, there is very much variations. So that such kind of, you know, the stability in the principles and laws of the system could not follow in the social science. तो इसलिए और किस्म की रिसर्च हो जाती है। However, here I have shown you different types of research. जैसे ये तो empirical research, descriptive research, analytical research, applied research, fundamental research, qualitative research, quantitative research, there are different kinds of research. Before starting the work, we have to look into what type of research we are going to do. ये सब में किसी कोई नहीं कर सकते, लेकिन काम करने से पहले हमें अपने एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आपने सुना होगा कहानी, लोग सुनाते थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, मोनिस लगा साहब, नाम सुना होगा, तो कहानी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी थे। ये हनुमान जी चले गए लेने संजीव बूटी, कहाँ गए? हिमालय पहाड़, तो पूरा पहाड़ ही उठा गए, ये पहाड़ पर और बूटी की जरूरत थी। तो रिसर्च ऐसा नहीं करना, रिसर्च आपको जो करना है उतने करना नहीं, पूरा लेकर पहाड़ लेके घूमना,
सारी लेकिन क्वेश्चन नहीं होगा ये. We must be confined to our particular interest and area of the research. So however, these are the different types of the research that I do this, you know. हाँ. क्या भाई? What is fundamental research? ये पूछा जाता है. Fundamental research क्या? Fundamental research, basic principles and reasons for the occurrence. Why the things is happening? How it is operating? This is reason. Causes. We have to find out. And that will be universal, not personal. It is universally accepted. For example, Newton law is a fundamental research. Archimedes theory, fundamental research. This is, for example, you know, in economics, this is a principles are promoted. For the Darwin theory, is the historical model in geography. There are different models in social science too. They are the fundamental research. They are providing, you know, base for the further research. Only base for the further research, like that. You know. So, however, the principles and reasons for the occurrence of a particular events are process or phenomena. It is also called the theoretical research. The study or the investigation of some natural phenomena are relating to pure science are termed as the basic research. इसे यूजीसी में एक डिपार्टमेंट है BSR फेलोशिप दिया जाता है बेसिक साइंस रिसर्च के ऊपर. जनरली नेचुरल साइंस को देते हैं, सोशल साइंस को नहीं देते. This is the, if you are modifying something, there are some models like Newton law. You are using the Newton law gravitational model and modifying it and using in this some other sectors, but it also became the base. It is also the basic research, fundamental. मिसाल के तौर पे माइग्रेशन पढ़ाया जाता है ना, तो माइग्रेशन पुल एंड पुश फैक्टर होता है. They are factor. So this pull and push factor is derived from the gravitational law of the interaction law of the gravitational. This is gravitational law of the retailing in the business administration. It is also used. So it is also model in the, for the business administration retailing center. So in this way, there are some theories which are modified and different other sectors are disciplined. It also may be the fundamental research. So fundamental research are making, you know, and ये बहुत जरूरी है कि कौन सा रिसर्च हम कर रहे हैं. जब फंडामेंटल रिसर्च, तो ये सवाल आपने कर लिया क्या क्या फंडामेंटल रिसर्च कैसे हुआ. What are the material like that? What are they? How does a crystal melt? These are questions. आपको आंसर मिल रहा है. And why is sound producing when the water is heated? सबसे जरूरी आपको. Why do you feel difficult when walking on the seashore? And why the birds arrange them like that? आप ये तो देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं. अब इसका रीजन आप तलाश कीजिए. This will be permanent reason. ये नहीं कि कुछ चिड़िया भरेगी, कुछ चिड़िया नहीं चलेंगी. सबका बिहेवियर एक ही होगा. यार भाई भाई एक हो. इसीलिए चिड़ियों के चलने पर हवाई जहाज बन गया. Because the birds have the universal phenomena. तो इसी वजह से ये सब क्या है? These are the questions related to the basic research, you know. Applied research. Applied research means by using the basic research in a different specific cases, and some required results are there. इसमें कि न्यूटन लॉ नहीं लगा दिए. आज नंबर किसे दी इकोनॉमिक थ्योरी दिया, नंबर इकोनॉमिक थ्योरी, और माल्थस थ्योरी और पॉपुलेशन, they are different models. We use them in a particular area, in particular cases, and we derive the result about that. So you see, applied. Applied is very important part because all the industries and development are taking place through the applied research, not fundamental research. So most of the in an applied research, one solves certain problems employing well-known and accepted theories and principles. Most of the experimental research, case studies, interdisciplinary research are essentially applied research. Applied research is helpful for the basic research. A research, the outcome of which has immediate application is also termed as the applied research.
such a research is of practical use to help activity, for example, research on social problem, having immediate use, तो इसको इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? अप्लाइड मतलब हमने बेसिक रिसर्च को अप्लाई करके बहुत से मसाइल को अपने हल कर लिया। जैसे ऑलमोस्ट वी आर डूइंग ऑल दी अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च बहुत कम कर रहे हैं। ऑलवेज वी आर डूइंग दी रिसर्च। ये सब थोड़ा सा डिफरेंसेस है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जस्ट लाइक यस्टरडे राइटिंग, we are describing the things which were unknown. कोई हिस्ट्री लिख रहा है, कोई ज्योग्राफी लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, perceiving things. This exploration. But description research aims to provide accurate portrayal of the particular phenomena or situation. It focuses on the describing and documenting the existing condition, behavior or attitude without attempting to explain causality. There is no need for the cause and effect analysis, but एक जनरल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जैसे दी जाती है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो जनरल रिपोर्ट ही कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। मानो थाने में कुछ केस हो गया, और 3 दिन में रिपोर्ट चाहिए साहब, शहर में राइट हो गया, 5 दिन में रिपोर्ट चाहिए, एक्सीडेंट हो गया, 2 रिपोर्ट चाहिए, 2 दिन में रिपोर्ट, अच्छा 2 दिन में रिपोर्ट क्या देगा वो, कौन सा का इफेक्ट एनालिसिस करेगा? तो दैट इज दी इन दिस काइंड ऑफ द वर्क इट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च is also sometimes very important. It provides the base for the analytical research, base for the basic research, also based upon the different kind of research. Exploratory research, in which the exploration is meant to explore the relatively uncharted territories or delve into the complex and less understood phenomena. Things are not known well. We jump into हाँ उसमें डूब जाए एंड सर्च आउट सब चीज, तालाब में नीचे जाकर के, समुद्र में जाकर के वहाँ से कोई मोती निकाल कर लाना, उसे क्या कहेंगे? एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। एम्स टू गेन द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, जनरेट इनिशियल इनसाइट्स एंड फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च often involve qualitative methods such as the interviews, focus groups, case studies. While exploring new events and perspective, this type of research lay down the help research navigate unexplored territories. ये बहुत सी चीजें होती हैं, ये पूछा जाता है। परसेप्शन रिसर्च होती है, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, नहीं डेटा है, डेटा कोई जरूरी नहीं, हर जगह स्टेटिस नहीं का, स्टेटिस तो बहुत बंगली करता है, हाँ स्टेटिस्टिक तो बंगली बहुत करता है, लेकिन आपका बिहेवियरल अप्रोच, लोगों से मिलना, ऑब्जर्वेशन करना, क्वेश्चन करना, इससे बहुत से एक्सप्लोरेशन होते हैं। एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, उसको एक्सप्लेन करना आपको, दैट इज दिस टाइप ऑफ रिसर्च वेयर स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड एंड डिफरेंट जीआईएस टेक्निक्स आर यूज्ड, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द मैप्स आर प्रिपेयर्ड, सुपरइम्पोज, द कोरिलेशन एस्टैब्लिश्ड एंड देन गॉट दिस फॉर्म, उसे कहेंगे explanation or explanatory research. However, these are different types of researches, you know. Means they similarly we are going back. Like you know the qualitative research in which the quantitative approach is adapted, quantitative in which the statistical techniques we use data. And you know, analytical research, it is also subtype in which we are making analysis, cause and all these things. You know, descriptive research. So these are different types of research, which are now studied prevalent. ये सब रिसर्च के अंदर आपको रिसर्च करना है, इसी में से आपको कोई तरीका अख्तियार करना है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रिसर्च करने से पहले आपके क्या क्या स्टेप होने चाहिए, जो बहुत जरूरी है। फिर आप सुपरवाइज आके नहीं जाएंगे, हाँ क्या रिसर्च करना है। Selection of the research topic, it is a very tedious job. Selection of research topic, very tedious job. And once you fail to do it like that,
एकदम जिंदगी भर आपको इसको झेलना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसको बदलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको उसी में अगर स्पेलिंग भी कहीं गलत होगी तो वही जाएगा, तुम बात है। तो नंबर 1 selection of the research topic, number 2 definition of the research problem, number 3 literature survey, number 4 assessment of the current status of the topic, research questions, formulation hypothesis, research design, actual investigation, data analysis and interpretation। 9 चीजें हैं जो आपको पीएचडी करने से पहले, उसमें घुसने से, मैदान में फील्ड में उतरने से पहले आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, नहीं मैदान में गिर जाओगे। हाँ, तो नंबर 1 परमाणु सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। टॉपिक शुड बी सुटेबल फॉर रिसर्च की पहली चीज होती है। आप कोई टॉपिक जो ढूंढ रहे हैं, आपका दिल ये कहे ये रिसर्च के लायक टॉपिक, कहते दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। मुफ्ती जानते हैं, जो सही चीज और गलत चीज बारे फैसला दे, मुफ्ती फतवा देता है जिसकी डिग्री। अगर दिल की बात मान ली तो सही, और अगर मैनिपुलेट किया तो गड़बड़। हाँ, तो दिल में आपका दिल भी है। For the research topic should be suitable for the research. Researchers should have interest in, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको भी मजबूरी में ऐसा होता ना कि किसी को रिसर्च करना है इकोनॉमिक्स में, अब उसका नहीं हो रहा, बेसियम चला गया, तो कह रहे आपको पॉलिटिकल में करना है, कुछ भी कर लूँगा, है ना। हमारे सामने की बात है, मोटा करने के लिए पास तो काम मेरा किसी भी इंटरेस्ट है फूड सिक्योरिटी में। उन्होंने कहा ऐसा फूड सिक्योरिटी तो हम नहीं कराएंगे, तुम प्लानिंग पे कर लो। सर प्लानिंग पे कर लेंगे, तो एडमिशन लेना, भेजा लेना। तो अब तो झेल रहा हो, तो काम नहीं कर पाएगा। डिग्री मिल जाएगी, किसी ने दिला ही दिया जाता है, लेकिन बस। तीसरी बात, टॉपिक शुड नॉट बी चोजन बाय कंपल्सन फ्रॉम समवन एल्स। किसी के कंपल्सन से टॉपिक अगर आपने चूज कर लिया तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। ये रिसर्चर की जिम्मेदारी है। शुड नॉट बी कंपल्सन। आप क्या करना है आपको फिर, सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक क्या होगा। थ्योरी ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट पढ़िए पहले, जैसे नाविल पढ़ी जाती ना, नाविल अफसाना निगार हर आदमी नहीं बन पाता, और गजल हर आदमी नहीं पढ़ सकता। बात सुनो ना, जब तक उस दुनिया में घुसा ना हो, वही शायर कर लेगा शायरी। हाँ, तो यार जो भी उसकी शक्ल हो, उसका तखय्युल होता है, दिमाग होता है, प्रशिक्षण होता है, फिर वो शायरी करता है तो हकीकत हो जाती है। ऐसे ही रिसर्च में है, theory of one's own interest. If you are interested about poverty, so we should read again and again poverty and all the theory related. If you are interested in the food security, you are terrorism, what your field interest है, उसपे हमें जरा सा शो करना पड़ेगा। डेली प्रॉब्लम, अब ये रिसर्च ऐसा नहीं होगा कि हम घर में जाकर बैठ जाएं। रिसर्च तो आंख खोल के आपको चलना पड़ेगा। जैसे आपको मिसाल देना, टेलर जो होता है, टेलर जब शादी में जाता है, अगर शेरवानी सिलने वाला है तो सबकी शेरवानियां देखता रहता है, और टाइल लगाने वाला जिसकी दुकान है टाइल्स की, तो किसी घर पे जाएगा तो टाइल उसकी निकाल देती है। ऐसे रिसर्चर जो है, जब कहीं जाए, अगर वो शादी में भी जाए, वो फंक्शन में भी जाए, कहीं भी जाए, तो अपने टॉपिक पे रहता है। इसको कहते हैं भाई। हाँ, तो डेली प्रॉब्लम, वी मस्ट अवेयर अबाउट डेली इश्यूज and concerned with our challenges. We must aware about through the newspaper, through the YouTube, through the whatever, social media, whatever may be. अगर ऐसा नहीं है तो उसके रिसर्च का परसेप्शन क्लियर नहीं होगा। हालात से मुतासिर होना बहुत जरूरी है। हाँ, जब कोई बात करें मैं बता देना। हाँ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस,
अब हम वही पुरानी चीज़ बात घूम रहे हैं, रिसर्च करने आ गए और वही पुरानी चीज़ें साहब, वो पेंसिल नहीं है, वो पेट्रोल नहीं है, स्केल नहीं है, बना नहीं है। अब तो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो पहले मोबाइल चलाना शुरू कर देगा। अब हम वो पुरानी चीज़ें लेके टेंशन बैठे रहेंगे तो रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजिंग आर कमिंग नाउ, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। रिसेंट ट्रेंड क्या रिसर्च का, बता रहे ये नहीं, पिछली नहीं पीटना। We have to look what kind of changes is coming. We have to aid something. बैठ नहीं जाना, रिसर्च बहुत हो रही है, बट आवर कंट्रीब्यूशन इज दैट कि पूरा मकान बना हुआ कौन सा ईंट हमारा है, बस एक नीट है ना भाई, उसे कहते हैं रिसर्च। तो उसमें हमें देखना है कि रिसेंट ट्रेंड क्या है, तो हमें टॉपिक ढूंढना आसान हो जाएगा। अनएक्सप्लोर एरिया कि नहीं, सुपरवाइजर ने क्या उसी टॉपिक हमने नीचे नकल मार दिया या फला नहीं कर देना, क्यूरियोसिटी अनुसार मुझे तो नई चीज कोई करनी है, एक्सपोर्ट जिसमें काम नहीं हुआ उसे क्या बताऊं, बात समझ कि ढूंढना पड़ता है कि टॉपिक आप कैसे करना है। डिस्कशन विद द एक्सपर्ट एंड द रिसर्च सुपरवाइजर लास्ट में काम है। आप जो पूरी तैयारी कर लें, ठोक बजा लें, फिर सुपरवाइजर के पास जाओ और उससे डिस्कस करें, नहीं डिबेट करें, बिल्कुल डिबेट करें कि नहीं वो जो हाँ हाँ सर हाँ हाँ सर ना। जब दोनों एग्री हो जाए तब अपना टारगेट फाइनल आप कर लें। समझ बात आ रही जी? हाँ, रिसर्च में यही होता है, और अगर नहीं ऐसा किया है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बाद में कहेंगे बोर्ड ऑफ स्टडी इसको चेंज कराओ, इसको ये करो, उसको वो करो, तो माइनर तो हो जाता है, मेरे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल गलती होती रहती है। अब कैसे सोचो कि तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक है, गलती की टेस्टिंग होती है ना। नंबर 8, it is a problem really interesting to him and the scientific community. कोई जरूरी जो चीज हमें अच्छी लगे वो सारे लोगों को अच्छी लगे, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी मीन्स द पीपल आर एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड शुड बिकम। हमारे ज्योग्राफी में एक मॉडल है लॉन्गिट्यूडनल मॉडल। इस मॉडल के अंदर बताया गया है कि अर्बन सेंटर के अंदर किनारे किनारे लैंड यूज पैटर्न एग्रीकल्चर कैसा हो, बहुत पुराना जर्मन मॉडल। एक रिसर्च स्कॉलर आया जोश में, कहा सर मैं इस मॉडल को रिजेक्ट करूंगा। वेलकम, तो अप्रिशिएट किया, लेकिन बताओ तुम्हारे पास है क्या, कोई काम किया है, कुछ किया है, कैसे? नहीं सर मैं इसे रिजेक्ट करूंगा, ऐसे नहीं रिजेक्ट होगा, ऐसा नहीं रिजेक्ट होगा, बस देर बस भी समझो। तो ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग टू हिम नंबर 1 पर्सनली एंड टू द साइंटिफिक कम्युनिटी। ये टेस्ट करना आपको, अपने टॉपिक को समझते हैं। इस प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट टू द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ आवर टॉपिक, यानी तो जो टॉपिक ढूंढो, जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में कहीं हम फिट हो रहे नहीं हो रहे, वरना हम वो पहुंच जाए जिसका नाम ही नहीं कोई ले रहा है, हम रिसर्च करते हैं उसे क्या करेंगे रिसर्च। तो ये टेस्ट करना, हाँ, इज देयर साइंटिफिक सुपरविजन और गाइडेंस, मतलब ऐसे टॉपिक मिले तो आपको सुपरवाइजर तो मिल जाए, मानो कोई गाइडेंस नहीं और टॉपिक ढूंढ लिया, आप घूम रहे इधर से उधर, बस समझ। मैं अपनी बताऊं, मैं सबके साथ वही हो रहा, हमारे साथ भी हुआ। केमिस्ट्री किया, मैथमेटिक्स हमारे पास थी, तो स्ट्रॉन्ग थी मैथमेटिक्स थी, तो मैंने कहा सर मैं एस्ट्रोनॉमी पे करूँगा रिसर्च। हमारे प्रोफेसर थे ऐसे में साहब, पढ़ाते थे मैथमेटिकल ज्योग्राफी, बोले इस पर नाम मत लेना, यहाँ कोई लैब नहीं, देहरादून जाना पड़ेगा, हाँ फिर कर नहीं पाओगे, आइडिया ड्रॉप ऐसे होता है। तो ये देखना है कि हम जहाँ टॉपिक में वो वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, कैसे डेटा मिलेगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व इन द रिक्वायर्ड टाइम? 5 साल है आपके पास, क्या 5 साल पूरा कर लेंगे? अभी देखने भाई, हाँ नहीं मान किसी ने ले लिया पूरा वर्ल्ड का एक स्टडी एरिया ले लिया और मालूम हुआ कुछ काम ही ना हो पा रहा, क्या करेंगे? एक साल में 27 साल में पेश किया था हमारे बात में are the necessary equipment adequate library ये सब आपको अवेलेबल है? ये सब आपको अपने टॉपिक पे टेस्टिंग के लिए
ये आपको ये बुनियादी चीजें हैं जो आपको देखना है। इसमें कोई साइंस नहीं है, ना इसमें कोई बहुत बड़ी थ्योरी है। अच्छा जब खत्म करना हो बता देना। अब जो बिगिनिंग आपको बोलेगी सबसे मेन चीज जो है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, द टॉपिक व्हिच हैव टू सेलेक्ट। कभी आपको बनाना पड़ता है प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट लेने के प्रपोजल बनाना पड़ता है, पीडीएफ के लिए प्रपोजल बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट वर्क दैट बिगिंस, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर प्रॉब्लम टू द कम्युनिटी, रीडर को, जो पढ़ करके समझ जाए कि वाकई जो बात कह रहा है ये है दो पैसे की। और यहाँ माए इधर उधर मांगते, बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं लिख पा रहे, बता रहा हूँ, स्क्रीनिंग में नहीं आ पा रहा उनका प्रोजेक्ट, क्योंकि दैट थिंग्स इज नॉट वेरी मच क्लियर यू। तो इट नॉट डिपेंड अपॉन द सीनियरिटी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ी समझने की चीज बस। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द ब्रीफ पीस ऑफ द राइटिंग दैट यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट और द प्रपोजल टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, इश्यूज, डॉक्यूमेंट इज एड्रेसिंग टू द रीडर। हम जो लिख रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो दूसरा पढ़ेगा, रिव्यू कमेटी होती है, उसको समझ में आएगा नहीं आएगा। हाँ, क्या करना है? इन जनरल, ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल आउटलाइन द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। Basic facts of the problem. Basic facts of the problem explain why the problem matters and pinpoint the solution as quickly as directly possible. आप अपनी समस्या को बताएं, ये समस्या कितना सीरियस है, how it is the issue for the human being, आप सोसाइटी जिसके लिए है, और इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। बस चंद जुमलों में आप इसे लिख दीजिए, आपका स्टेटमेंट आप होगा। और यही बात को लिखने के लिए 18 पेज लिखते हैं, बात क्लियर नहीं हो रही। इसी को आप एक पेज में लिख दीजिए, बात क्लियर होगी। तो लोग कहते हैं मैं तो इतना बड़ा बढ़िया प्रपोजल बना, हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसका एक्सेप्ट हो गया, उसके चाहने वाले ज्यादा थे, उसको मानने वाले क्या लगाते हैं। ऐसा नहीं होता इन जनरल ऐसा नहीं होता। हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जब अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं तो हमारी सुनेगा क्या बात समझ। बाद ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि 2 मिनट के अंदर अपनी बात को समझा देंगे, और बाद ऐसे हैं कि 3 घंटे में समझा पाएंगे। तो व्हाट इज इन रिसर्च, यू नो, द फर्स्ट वर्ड दैट स्टार्ट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, इट इज एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ राइटिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, हाउ इट इज मैटर टू अस, सोसाइटी, कम्युनिटी, अर्बन, एंड हाउ कुड इट बी रिजॉल्व इफ सच काइंड ऑफ द एक्टिविटीज आर अडॉप्टेड और सॉल्यूशन देंगे आपने। अब इसको मैं आपको जानना है। इसलिए में आप स्टेटमेंट अगर लिखना समझ गए तो आपका बहुत साफ हो जाएगा। मेरिट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट फॉर व्हाई योर रिसर्च इज नेसेसरी एंड पोटेंशियली वैल्यूएबल टू द डिसिप्लिन। क्लियर? बस तुम्हें ये बताना है कि ये क्यों बहुत जरूरी है। हाँ, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल डेयरी फार्मिंग सोल्यूशन फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन। अब आपको बताना है कि डेयरी फार्मिंग कैसे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और इसको कैसे बढ़ा दिया जाए या कैसे कर दिया जाए ताकि सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो, सब गरीब अमीर हो जाए। हाँ, आपको ऐसे पेश कर दे, जब कंपनी वाला पेश करता नहीं, हाँ लाता है एड पर लग रहा है कि अभी फौरन से क्लिक कर दो और शॉप कर देते बोलो जल्दी से बढ़ से। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। वन कांट वैल्यू ऑन रिसर्च विदाउट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट व्हाई दैट रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड। अगर आप ये नहीं है तो उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसकी मेरिट है। आप अगर इसको क्लियर कर लेंगे तो सब काम बन जाएगा। और फार्मर जब होता है इसी फार्मर में लिखना स्टेटमेंट, इसके 3 पार्ट हैं। But first are the ideal condition. First is the ideal condition, that is not existing, but ideal condition. जैसा आप यूँ कहें कि अगर दुग्ध उद्योग एंड मिल्क इंडस्ट्री
डेवलप कर दिया जाए तो इंडिया में कोई गरीब बचेगा नहीं और न्यूट्रिशन इंटेक बढ़ जाएगा और तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें हो जाएंगी सर, एक आध कर दिया क्या बोले बंद कर दीजिए। नहीं मैं बंद कर दूँ, बाइक की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही माइक तो अंडरस्टैंड भाई। आइडियल कंडीशन ऐसा पेश करो कि जैसे इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ टू पॉइंट बी reality. Now you describe reality. Describe the reality. Real situation what is. In rural area, dairy farming not so developed because there is a problem of the capital, problem of the space, no incentive there, no credit facility there, no marketing, no like that. That problem is or hindrance to achieving the आइडियल कंडीशन, इसको आपको हाईलाइट करना, प्रॉब्लम बना। और थर्ड पे जब आगे सोल्यूशन देना, ये आपको देना वे रिसर्च नहीं किया, बट यू हैव टू गिव द सोल्यूशन। consequences identified the way you propose to improve the current situation and move it closer to the goal and ideal condition। ऐसी राय आप दो, ऐसे सजेशन दे दो कि अगर ऐसा ऐसा कर दिया जाए तो आइडियल कंडीशन पहले वाली तो आ जाएगी। सुना कि तीन बातें हैं, वो कुछ नहीं, हाई फॉरवर्ड एकदम बिल्कुल, और फिर अपनी सिचुएशन हालात बयान करो, और फिर तीसरी बात को ऐसा हो जाए तो हमारे हालात बिगड़ करके वहाँ सही हो जाएंगे, बन करें हो गया था और क्या लिखना है। तो यही प्रॉब्लम यू शुड सेलेक्ट लो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसको अदरवाइज व्हाट हैपन, लिखते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, बात क्लियर नहीं होती और रिजेक्ट हो जाता है। अब तो उसमें होता क्या नाम है, कौन सी कमेटी, रिसर्च कमेटी, वो भी देख रही है, बात को प्रपोजल देख रही, क्या कर, लेकिन तो चल जाता, कोई बात नहीं। बट व्हेन विल बी पुटिंग बिफोर द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर द अप्रूवल, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको फिर पहले बढ़िया लिखना पड़ेगा, लोड के नहीं आएगा फिर, हाँ, और बनना फिर लोड। और मैं आपको ये प्राउड नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, आज तक कोई रिसर्च प्रपोजल स्क्रीनिंग में रुका नहीं है। तो बताएगा 10 प्रोजेक्ट हो ही चुका है, एक आध कटे भी हैं, लेकिन वो स्क्रीनिंग में नहीं कटे, फर्स्ट स्टेज। तो ऐसे आप जब लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कटेगा कुछ नहीं, भले ना मिले देगा, बट यू मस्ट कम एट लीस्ट एट द लेवल ऑफ इंटरव्यू या समझो तो होगा ऐसा। तो इसको आप जरा फॉलो कीजिए और बढ़िया फॉलो कीजिए। देन नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? स्टेटमेंट अलग चीज है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अलग चीज है, कभी को दोनों को मेक कर देते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, it is a kind of the framework of the thought, issues, factors, all are designing in a proper way that you can very easily navigate your research। concept क्लियर करना सीखते हैं, जब तक concept नहीं क्लियर होगा तब तक आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन रहेगा। A written or visual presentation that explain either graphically or in narrative forms the main things be studied, key factors, concept, variables and the presumed relationship among them। ये सब बातें बहुत क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे आपको डेयरी फार्मिंग ने एग्जाम्पल दिया, अब डेयरी फार्मिंग क्या है, डेयरी फार्मिंग को कौन सी चीज इम्पैक्ट कर रहा है, डेयरी फार्मिंग से कौन से लोग जुड़े हुए हैं, डेयरी फार्मिंग हो जाएगा तो कहाँ पे बिकेगा, कैसी मार्केट होगी, कैसे क्या होगा, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट व्हाट विल बी की फैक्टर, की इश्यूज, ऑल दी थिंग, ये आप जब एक करके एक्सप्लेन कर देंगे, चाहे डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम में लिख दिया जाता है एक्सप्लेन होगा, मान लो टेक्सचुअल में लिख देते हैं, दोनों काम कर सकते हैं आप जैसा चाहते हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये रिटन विजुअल presentation that explain either graphically or in narrative form the main things to be studied, the key factors,
concept are the variables and the presumed relationship among them. Then you know इनपुट्स कहाँ से आएगा आपका इसका? जब आप फ्रेमवर्क लिखेंगे तो उसका इनपुट कहीं चाहिए, मतलब तुम्हारे नहीं मारेंगे, हाँ तो बुलाना पड़ेगा कुछ ना. नंबर वन, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट एंड द सुपरवाइजर, ये दोनों को नाल काम करता है. डिस्कशन. सेकंड, द टेक्निकल नॉलेज. थर्ड इज द रिसर्च बैकग्राउंड. फोर्थ इज द पर्सनल एक्सपीरियंस. डेटा पर्टिकुलर फॉर द क्वालिटी. पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब ऑब्जर्वेशन. आप समाज में रह रहे हैं ना, तो समाज को खुद देख रहे हैं, तो आपको तो कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं ना दिमाग में, वो भी एक्सपीरियंस आपका. सुपरवाइजर के पास बैठे, सुपरवाइजर को समझने के सुपरवाइजर फौरन थोड़ा मिल जाता है. वो तो एमएससी भी पढ़ा रहा है, एमए भी पढ़ा रहा है, उसके बाद रोज तजर्बा सब चलते हैं. सुपरवाइजर क्या हमारे कैसा है तो सब पूरा पता रहता है ना. नया आदमी तो चक्कर है, लेकिन पुराना तो सबको पता है. तो ये सब क्या है, ये सोर्स इनपुट्स हैं जिससे आपको मटेरियल मिलेगा कि क्या हमें कॉन्सेप्ट में लिखना है. कॉन्सेप्ट में मतलब टाइम काफी बहुत शॉर्टेज दे, 1 घंटे बड़ा मुश्किल काम है. हाउ माइट ए प्रिंसिपल फ्रेमवर्क. आप क्या क्या इसमें करेंगे देखिए. नंबर वन, कीवर्ड तलाशना. आपको कीवर्ड समझते हैं? हर एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड लिखा जाता है. क्यों भाई? Keyword means that terms which you are using again and again for this purpose. तो हर थीम का अलग अलग कीवर्ड होता है. So you have to search. Keyword used in the subject area of your research. Key things. main point आपको क्या हाईलाइट करना है, उसे key things कहते हैं. सबको नहीं लपेटो, मेन पॉइंट को ध्यान में रखो कि यार क्या क्या इसके अंदर बात की. जैसे आपको डेयरी फार्मिंग है, तो डेयरी फार्म में दूध है, डेयरी फार्म में भैंस है, डेयरी फार्म में किसान है, डेयरी फार्म में मार्केट है, डेयरी फार्म में पैसा है. बस मोटी मोटी बातें, इसको ध्यान रखे, उसकी घूमते रहे उस पीछे. तो दिस इज हाँ कुछ कह रहे क्या? हाउ माइट ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बी डेवलप्ड. Piece of the conceptual framework are borrowed, but researchers provide the structure to develop the structure quicker. ये सब आप अपने लेंगे, किताबों से पढ़ेंगे, मटेरियल इकट्ठा है, वहाँ से उधार लेंगे, नकल मारेंगे, सब करेंगे, लेकिन उसको आप माली जैसे काट खींच के उसको सही करेंगे, प्रूविंग करेंगे. देखो रिसर्च में नकल करना कोई गुनाह काम नहीं, लेकिन उसको जरा सलीके से कर दो, डिफरेंस दे दो, कोई गुनाह नहीं. हाँ लोग नकल करके ना लाए, कहाँ लाएगा, लेकिन उस नकल को एक्नॉलेज कर दो, चोरी कर दो. हाँ बस ना. टेक वन की कॉन्सेप्ट, की आइडिया, टर्न, टाइम एंड ब्रेनस्टॉर्म all the other things that might be related to them and go back and select those that seem most relevant. दिमाग को घुमाओ एकदम, खिचड़ी कर दो दिमाग को, बातें को दिमाग में सोचो, फॉर डिसीजन ले लो, सोचो, जो सबसे रिलेवेंट लगे चीजें उसे नोट कर लो. भूल जाओगे, हाँ ये जो हमसे बात सुनना, जो सोचो लिख लो, सोचो लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ. जो फिर बाद में तुम्हें सबसे बढ़िया लगे. हर चीज में सिलेक्शन ऐसे होता है भाई. हाँ सिलेक्शन करने तो ऐसे होता है, बार बार देखो, बार बार समझो. हाँ whichever is the use, it will take time and numbers of iterations and the focus is both on the content and time. टेंशन होगा, इरिटेशन होगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी जब कुछ होगा, तो स्टेशन में सो जाओगे, लेकिन ये है कि थको मत. इसमें दो तरीका है. एक तो प्रोसेस फ्रेमवर्क. प्रोसेस फ्रेमवर्क मीन्स हाउ दी वर्क विल बी डन. Set out the stages through which an action move from initiation to conclusion. हम कैसे काम करेंगे इसको तय करना है. ये दूसरा कंटेंट के फॉर्म में चलना है. कौन कौन चीज पहले हमें लेंगे, क्या करनी है. Set out the variables, possibility, the relationship with the relative distance between them, and take other answer to why. तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके में फ्रेमवर्क को सेट किया जाता है. प्रोसेस में भी
बहुत डिटेल हो जा रहा है। नेक्स्ट बात जो आपकी है, हाँ, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू ये बहुत जरूरी है। लड़का इसे भागता है, लिटरेचर रिव्यू से बहुत भागता है, और विदाउट लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च नहीं हो पाएगी। दो रिसर्च कारण है स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, उसका कोई पेपर रिजेक्ट नहीं होगा, एंड यू आर वेरी गुड रिसर्चर इन फ्यूचर। और जो नकल पकड़ मार के इधर से करता रहता है ना, इधर का उनका लिया उनका, वो चल नहीं पाएगी गाड़ी। लिटरेचर रिव्यू फिनिश अबाउट दैट, आप तो दिसो आप आगे मौका मिला तो आगे बढ़ाएंगे। हाँ, लिटरेचर रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द डिसर्टेशन where there is extensive reference to related research and the theory in the field. It is where the connections are made between sources, texts that you draw on, and where you position yourself among those researchers. जब आप किताबें पढ़ेंगे ना, तब आपको पता होगा आप खड़े कहाँ हैं। नहीं तो समझे कि हमें पहला नंबर है जो रिसर्च करने जा रहे हैं। हाँ, जब पढ़ोगे तब आपका आइडिया डेवलप होगा धीरे धीरे। लेकिन रिसर्च एक दिन का काम नहीं, इसे 5 साल दिया जाता है। हाँ, एक दिन में आपको अगर एक नॉलेज हो गई ना तो बहुत है, कभी कभी महीनों लग जाते हैं इस चीज को समझने के लिए। एक बार एक ऐसे कोर्स में थे तो वैशाला साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो आए हुए थे, तो बताने लगे मैं फिजिक्स में रिसर्च कर रहा था और गाड़ी फंस गई कहीं कुछ समझ में ना आए, महीनों लग गए, रिजल्ट चल रहा है। तो एक प्रतापगढ़ में मिठाई की दुकान थी, उस मिठाई की दुकान पे हो गए, मिठाई खाया, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा बताओ तो इसमें करते क्या? उसने कही ना बताऊंगा मैं। क्या ऐसी टेस्ट की मिठाई कहीं मिलती नहीं? कहा ना मैंने बताऊँ, जहाँ की उसका नहीं पता तो बनाते हैं। कहीं कहा एक चीज बता दे रहा हूँ, ये मिठाई एक सेट टेम्परेचर पे बनती है, ना आगे ना पीछे, टेम्परेचर फास्ट है। तो फिर साहब बोले वो बात हमारे समझ में आ गई, हमने जाकर उसको अप्लाई कर दिया। डिफरेंट टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया, एक सेट पे आ गया टेम्परेचर, वहां पर रिजल्ट निकला है। पहले सारा 15 साल हो गया। तो ये होता है ना, रिव्यू है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हलवाई से रिव्यू कर लिया उन्होंने। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से इट इज वेयर द कनेक्शन आर मेड बिटवीन द सोर्स टेक्स्ट एंड यू ड्रा एंड वेयर यू पोजीशन और पोजीशन प्रोसेस अमंग बोथ एरिया। इट इज योर अपॉर्चुनिटी टू engage in the written dialogue and researcher in your area, while the same time showing that you have the enough and engaged with understood responded to the relevant body of the knowledge underpinning your research. अब देखिए लिटरेचर सर्च में क्या क्या चीजें किया। नंबर ऑफ रिलेटेड थ्योरी वो पढ़िए, आपके फील्ड से जितने रिलेटेड थ्योरी हैं इधर उधर भी झांकिए थोड़ा सा। बाल लड़का तो एकदम उसी बात है, हमारे टॉपिक पे यही इतना पढ़ेंगे था कि नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर देखना। हाँ भाई टाइम बता देना। जी जी हो गया। हाँ, तो रिलेटेड थ्योरी भाई, देन रिलेटेड रिसर्च जर्नल्स बहुत से आते हैं, आजकल ऑनलाइन जर्नल अवेलेबल है, उसको पढ़िए, खूब जम के पढ़िए, 100 200 300 जितना पढ़ पाइए, थकिए मत। एंड अदर थ्योरी एंड रिसर्च, इसको पढ़ना, ठीक है। हाँ, अब देखो ऐसा है कि आपका टाइम जा रहा है वो भी तैयार खड़े हैं, तो अब आगे मौका मिलेगा तो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ क्या? हाँ सब अवेलेबल है, ले जाओ, तो ऑल दीस थिंग्स नो, तो आप ही करिएगा। तो नाउ आई विश यू नो, एंड अगर आपको कोई बात हो पूछनी है बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे अगले मौके पर। हाँ, जो मौका मिला तो हाँ जी, हाँ खड़े हो पूछिए। तो नॉर्मली ये होता है ना कि विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर यू शुड गो फॉर योर रिसर्च एरिया। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोफाइलिंग, वहाँ पर प्रोफाइलिंग पहले देखी जाती है, फिर करके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन किया जाता है। हां उसे ही ऑलरेडी सेड इन दैट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडर और गाइडेंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में जाके भी मैं
अवेलेबिलिटी आप बताई गई। अगर कोई ऐसा अवेलेबिलिटी है कि 4 साल आगे जा रहा है तो और नहीं अवेलेबल तो 4 साल आप आगे बढ़ते जाएंगे और क्या करना, 4 साल के बाद आगे हो जाएंगे, छोड़ना नहीं है अवेलेबिलिटी जो है। अब आदमी आएंगे क्या करेंगे आप? सर जैसे आपको पता है कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक जो है वहाँ से लेके रिव्यू लिटरेचर तक जो है सर, जो बीच में आपने बताया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वगैरह, तो आपने सर रिव्यू लिटरेचर करना मतलब बहुत अच्छा और बहुत जल्दी है। तो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वहाँ तक जो है उससे मतलब जैसे टॉपिक जैसे हमने लिया तभी हम रिव्यू लिटरेचर करना शुरू करते हैं, और या फिर पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो सबसे पहला काम सरकार है ये लिटरेचर रिव्यू पर, मतलब अगर वो जो है सबसे पहले काम पढ़ना है, तो लिखने की बात है बता। आप जब रिसर्च में दाखिला ले लें, दाखिले के बाद काम शुरू होता है, तभी आप प्रपोजल बना के देंगे। कभी कभी पहले प्रपोजल मांगा जाता है, तो जब तक आपको प्रायर स्टडी नहीं है उसमें लिखेंगे क्या। तो इसीलिए जरूरी है टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए भी जरूरी है लिटरेचर सर्वे। आप पहले से अगर पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो पहले से उस लाइन में पढ़िए, फिर आपको टॉपिक मिलना आसान हो जाएगा। अब एनी हाउ इफ योर टॉपिक इज डिसाइडेड देन यू गो फॉरवर्ड विद द लिटरेचर फर्स्ट, और 2 नहीं 5-6 महीना उसको पढ़िए एटलीस्ट, तब जाकर के आपको पता चलेगा आपको करना उस फील्ड में क्या करना है। बात समझ रहे हैं? हाँ, लिटरेचर बहुत जरूरी है, तो हमने बाद में इसे रखा है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट फेज इनसे आपको कराया जाता है और सब विश्वास पे ही कराया जाता है। पहले जाओ पढ़ के आओ, 2 महीना बाद पढ़ के 4 महीना 6 महीना पढ़ के बस भाई कॉपी। हाँ हाँ लिटरेचर रिव्यू आप ये थोड़ा सा बहुत टेक्निकल वर्ड है, रिव्यू लिटरेचर एंड लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मतलब here are some material which are already reviewed, and then it is mentioned and described by. तो कभी कभी रिव्यूड आर्टिकल छपते हैं, समझे? तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे लिटरेचर ऑफ रिव्यूज। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स यू आर studying the literature and then you are reviewing them and writing some points. Okay, clear हो कोई? हाँ।